नमस्कार मित्रों, कुसुम.net में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 13, क्रिएट यूनिक कस्टमर नंबर यूजिंग डेंस रैंक फंक्शन इन एसक्यूएल। सो लास्ट टाइम हमने ऑर्डर नंबर कैसे क्रिएट करना है, फिर वेंडर नंबर फॉर पर्टिकुलर ग्रुप, हाउ टू क्रिएट, ये हमने देखा। आज हम देखेंगे कि यूनिक कस्टमर नंबर कैसे क्रिएट करना है। हर एक कस्टमर के लिए एक यूनिक नंबर रहेगा, फिर भले ही वो बार बार रिपीट होता है तो भी उसका नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यूजिंग डेंस रैंक फंक्शन, हाउ टू यूज दिस customer number, how we will create this customer number, let's check it. So let's go to the SQL server and write the query. अगर आपने मेरा पास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ करके पार्ट 12 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने रोल नंबर फंक्शन कैसे यूज़ करना है ये दिखाया है और ऑर्डर नंबर कैसे क्रिएट किया जाता है वो दिखाया है। तो चलिए चलते हैं, कस्टमर नंबर कैसे क्रिएट करना है। लास्ट टाइम ये क्वेरी मैंने जनरेट की थी, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये वेंडर नंबर और ऑर्डर नंबर जनरेट किया था। नाउ मुझे कस्टमर नंबर जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डेंस रैंक फंक्शन यूज करूंगा। सो रैंक ओवर, ओके, रैंक ओवर किसके ऑर्डर भाई, तो भाई कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग टू उसको यूनिक नंबर देना है। ओके, सो ऑर्डर बाय कस्टमर नेम एज एस, अभी उस फील्ड का नाम हमें क्या देना है, तो हमें अगर सपोज नाम देना है कस्टमर नंबर, then we have to write like this. Okay, so the field will be generated using this name. Okay, now run this query and check it. You can see here, for all the customers have unique number. For Govind 1 number, Lavish 2 number, Rajesh 5, Mahesh 3 and Nilesh 4. Okay, if the same customer will arrive again, then it will be repeated. Okay, let's check it how to do it. So मैं ये जो मेरा सेल्स टेबल है इसमें मैं एक सेम नेम फिर से डालता हूँ। ओके, सपोज I put Rajesh name again. Okay, and he has taken another product, shoes, and 800 rupees, and he is selling, he has purchased Bata shoes. Okay, so Rajesh here is 2 times. Okay, so what is my saying, I am saying that if the customer name is repeated again, the customer number should not be changed anyhow. Okay, so let's run this query again and check it, execute this. Okay, you can see here there is different users. Now Rajesh is 2 times. Okay, so Rajesh have customer number 5, then again if Rajesh come to buy any product, that time also the customer number is repeated same for that unique customer. Okay, for Mahesh 3, only 3, Nilesh 3. If Mahesh comes again, then also his unique customer number will be 3. Okay, same like Rajesh. So this way you can create the unique customer number. Okay, now these customer numbers are in not in order. Okay, so to get it in order, the name for the particular customer number for particular customer name, what I will do, I will write dens rank function. So I will put here dens underscore rank. This function will create order by customer number, means in order. So let's run this query again and check it. Press F5. Now you see the first customer name will have first customer number, the second customer have the second customer number, but
The third customer is Rajesh, and he has come again in the fourth place. So the customer number will not be changed, it will be same. Okay, so this dance rank function will create unique customer number by in ascending order. Okay, you can say like this. So यहीं पे ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।